Good afternoon, everyone. How are you all? I hope all of you are very well, enjoying the weather and studying a lot. Okay, making a lot of sentences. Because if I talk about spoken English, then the question is, are you practicing? Are you making sentences? Are you asking questions? Are you doing some of those exercises that I have suggested? Okay. Are you doing that mirror exercise? Are you standing in front of mirror and making some sentences, asking some questions? Are you revising the situations that we have already completed? What are those situations, structures related to verb to be, possession, there as a subject, it as a subject, and then you are doing different exercises that we have completed. Are you practicing with the help of those exercises continuously, regularly? Are you thinking? Are you practicing with your friends? Are you asking questions with your friends? Are you asking your friends to sit with you, attend classes, okay, and then do different sorts of exercises in terms of practicing? So you have to keep on doing all these things, and you have to make sure that from your side you are doing it regularly on daily basis. So because we will do different structures, so far we have completed some of the structures, and then you have to make sure that there are some different sentences from those situations, from those structures. So you are trying, you are thinking, you are using them, you are making sentences. You are also trying to use different vocabulary in terms of thinking, in terms of making sentences. ओके सो ये सारी चीज़ें आपको करते रहनी है, प्रैक्टिस भी करती रहनी है, सेंटेंसेस भी बनाते रहना है, वोकेबलरी भी यूज़ करनी है. अभी सिंपल वर्ड्स की हेल्प से सेंटेंसेस बनाएंगे, थिंक ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस. ओके सो ये सारी जो प्रैक्टिस है, जिसमें आपका जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस ये भी है कि आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, जो भी आप सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं या क्वेश्चंस बोल रहे हैं या किसी सिचुएशन के बारे में कुछ सेंटेंसेस बोल रहे हैं. सो देन रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड लिसन बैक टू व्हाटएवर यू से. ओके सो उसमें आप देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान जाएगा, सेंटेंसेस पे भी ध्यान जाएगा. एंड इफ यू थिंक दैट देयर आर सम एरर्स, then rectify those errors, correct those errors, and then again say some. वो फिर से कुछ कही, राइट? सो थिंक लाइक दैट, डू प्रैक्टिस लाइक दिस. एंड जितना ज्यादा ऐसे करेंगे उतना ज्यादा हेल्पफुल होगा इन टर्म्स ऑफ using all the different structures, right? So different structures हैं, positives, negatives हैं, questions हैं, WH questions हैं. जैसे हमने लास्ट क्लास में भी प्रैक्टिस करी थी, इससे पहले भी हमने प्रैक्टिस करी थी कुछ sentences की. So if you listen to the yes no question, you can give both answers. You can give yes answer also, you can give no answer also. And we also talked about that how to ask questions, and asking questions is somewhat difficult. At the same time they are important. So important भी है, थोड़ा सा difficult भी है. So you have to get into the habit of thinking and asking questions. So आपको वो भी करना है, that question पूछना है. So question पूछने के लिए अब हो सकता है कि आपके साथ कोई प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है. So उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको ये अकेले ही करना है. Okay, so for that you have a mirror as your friend. मिरर की हेल्प लीजिए, खुद क्वेश्चन पूछिए, आंसर दीजिए, फिर से खुद क्वेश्चन पूछिए, आंसर दीजिए. एंड वहाँ पे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. सो लेट्स से कि आपने 5 मिनट्स तक प्रैक्टिस करी, एंड 5 मिनट्स तक आपने रिकॉर्ड करे, क्वेश्चंस आंसर सब रिकॉर्ड हो जाएगा. ओके एंड देन फिर आराम से बैठ के उसको सुनिए. Listen to your question, listen to your answer, and if you see that you said something wrong or you mispronounced a word, then correct those mistakes, उनको करेक्ट करें एंड फिर से उनको एक बार ट्राई कर सकते हैं. सो ये जब हम करेंगे, जब हमारे पास प्रैक्टिस का कोई ऑप्शन नहीं. एंड इफ यू हैव some options like you have friends, you have someone from your family member, so फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा, फिर उनके साथ कर सकते हैं. ओके लेकिन करना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. क्योंकि हर क्लास में ये पॉइंट्स रिपीट होते हैं कि आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सेंटेंसेस यूज करना है, बिकॉज उसी को कर करके आप कंफर्टेबल हो.
सो सिर्फ हमको ये नहीं समझना है कि हमने कोई टॉपिक समझ लिया, उसके स्ट्रक्चर समझ लिए, उसकी ग्रामर समझ ली हमने, थोड़े से एग्जाम्पल्स की हेल्प से, एक्सरसाइज की हेल्प से हमने उनको यूज कर लिया, सो देन इट्स ओके। फिर हमको उसके बारे में कुछ नहीं करना है, हमको समझ में आ गया। यस दैट इज ट्रू कि आपको समझ में आ गया है, लेकिन स्पीकिंग में लाने के लिए आपको उसको बार बार यूज करते रहना पड़ेगा। जब भी आपकी वो हैबिट होगी वर्ड्स को यूज करने की, सेंटेंसेस में यूज करने की, क्वेश्चंस पूछने की, नेगेटिव स्टेटमेंट्स देने की, ये तब हैबिट में आएगा जब आप इसको यूज करते रहें। राइट, क्योंकि आपने ऐसा रियलाइज भी किया होगा कि जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो एकदम से आपको ध्यान में नहीं आ रहा दैट हाउ विल आई आस्क दैट क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटेड टू पर्टिकुलर सिचुएशन। सो ये इसलिए नहीं है कि आपको पता नहीं है, इसलिए कि आपकी हैबिट नहीं है एकदम से क्वेश्चन सोचने की या एकदम से आंसर देने की। वहां पे थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। सो फॉर दैट यू हैव टू कीप practicing, right? So just think in a simple way, think in an easy way, and just make sure that you take out 15 to 20 minutes on daily basis to do such kind of activities. Okay, 5 minutes की short activities जल्दी जल्दी करके देखिए, and then review all the parts. वो कोशिश करिए कि सारे पार्ट्स जो हमने किए हैं उनको रिव्यू कर लें। ओके, रिव्यू कर लेंगे इन द सेंस कि आप जब सेंटेंसेस यूज करेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली रिव्यू हो जाएंगे। तो इसमें यहाँ पे याद करने वाला तो कोई पॉइंट नहीं है। सो आपको ये भी नहीं सोचना है कि हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हमको करना है जो हमको याद करना है, नहीं। याद नहीं करना है आपको, सिर्फ उनको यूज कर करके वो फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर वो नेचुरली सेंटेंसेस आए। लेकिन उसके लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो टुडे इज आवर 14th डे, एंड आज 14th डे में अगेन आप थोड़ा सा एनालाइज करिए कि आपकी 13 डेज की जो जर्नी है लर्निंग की, अंडरस्टैंडिंग की, वो कैसी है। आपने क्या अंडरस्टैंड कर लिए हैं पॉइंट्स, क्या लर्न कर लिए हैं पॉइंट्स, और कितना कंफर्टेबली आप उनको यूज कर पा रहे हैं। ओके, सो ये हमारा जो है ये एनालाइजिंग चलती रहनी चाहिए, हमको ये एनालाइज करते रहना है कि हमने क्या सीखा, हम और उनको कितना कंफर्टेबली यूज करना है। कंफर्टेबली यूज करना इन द सेंस कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो आप उनके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनके आंसर्स दे रहे हैं, आपको पता है किस सिचुएशन में हमको क्या क्वेश्चन पूछना है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, सो यू विल make present related question from different situations, verb to be, possession, there, it. If you are talking about future, then you have to think of future related sentences, you have to make sentences related to future। सो ये जल्दी से क्लिक होना चाहिए आपको। ओके, सो अगेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि हमको ट्रांसलेशन ज़्यादा नहीं करना है। ओके, ये पॉइंट भी बार बार रिपीट हो रहा है हर क्लास में कि आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है ज़्यादा, आपको हिंदी में सोच के फिर उसको ट्रांसलेट करना। राइट, ये जितना कम होगा उतना आप कोशिश करेंगे ऐसा करने। ओके, हो सकता है कि कहीं पे आपको लगे कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, देन वहाँ पे आप सोचिए, हिंदी में सोच के उसको थोड़ा सा हेल्प ले लीजिए। बट देन अगेन यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, जैसे हमने लास्ट क्लास में करा कि थिंक इन इंग्लिश, गेट इन टू द हैबिट ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में थिंक। ओके, उसकी हैबिट डालिए एंड धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा। सो फिर आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, यू विल एंजॉय मेकिंग सेंटेंसेस एंड यू विल नॉट टेक द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। फिर खुद ही वो ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए आपको पहले तो अपने तरफ से एफर्ट्स लगाने। ओके, बिना कोशिश के तो डिफिकल्ट हर चीज़ होती है, एंड कोशिश आप करते हैं तो हर डिफिकल्ट चीज़ जितनी भी डिफिकल्ट हो वो इजी हो जाती है। एंड फिर आपको इस इन ये जो एफर्ट्स हैं जो आप लगाएंगे, जो लगा रहे हैं और जो आगे भी लगाएंगे, कोशिश अपनी तरफ से करेंगे, फिर आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। एंड जब रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा तो फिर देन यू विल एंजॉय दैट पार्ट, क्योंकि डेफिनेटली आप जो ये लर्निंग कर रहे हैं, आप जो ये स्पोकन का ये जो लेवल 2 है इसके पार्ट्स आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ये आगे जाके आपको हेल्प ही करनी है। ओके, सो हेल्प होगी आपकी, हर जगह हेल्प होगी, बिकॉज लैंग्वेज में अगर आप कंफर्टेबल हो गए तो वो तो फिर लाइफ टाइम वाली बात हो जाती है
कि आपको वो लाइफ टाइम हेल्प करती रहेगी, राइट, इन डिफरेंट फील्ड्स। ओके, टॉकिंग में, फ्रेंड से टॉकिंग में, प्रेजेंटेशंस में। सो इफ यू आर इन स्कूल and you will give some presentations, you will go to college. If you are in college, then definitely you will give some presentations. You will go for the interviews. There you will use the language. There you will be comfortable in terms of asking questions, in terms of answering questions. So ये जो comfort level है वो धीरे धीरे आना है इसको, किस कंफर्ट लेवल को। सो थोड़ा सा टाइम लगना है। तो अभी आपको करते रहेंगे तो फिर डेफिनेटली थोड़े से टाइम में फिर कंफर्टेबल हो जाएंगे। एंड कंफर्टेबल हो गए सो देन यू कैन यूज द लैंग्वेज एनीवेयर, जहाँ पे भी आपको यूज करना है। एंड डेफिनेटली when you know how to speak this English language, how to use the language properly, right? So then you have that sort of confidence. फिर आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, राइट, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है दैट यस, फिर आपको वो हेजिटेशन नहीं रहता, राइट, कि अगर हम जाएंगे कहीं पे सो वो इंग्लिश, वहाँ पे इंग्लिश में कुछ पूछ लिया या इंग्लिश में हमको कुछ एक्सप्लेन करना पड़ा, तो हाउ विल आई डू दैट, हाउ विल आई से समथिंग इन इंग्लिश। सो देन यू विल कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। ओके, लेकिन इसके इसी के लिए अभी जो आप कोशिश करेंगे उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा, राइट। एंड इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से जितने ज़्यादा एफर्ट्स हो सकते हैं आप एफर्ट्स लगाइए एंड मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट। ओके, चलिए, सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे रिलेटेड टू वर्ब टू बी पास्ट सिचुएशन। सो वो एक्सरसाइज मैं आपको शो करूंगा, वो एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। देयर आल्सो यू विल गेट द आइडिया रिलेटेड टू दैट सिचुएशन। ओके, एंड देन एक्टिविटी भी कर लेंगे छोटी सी। उस एक्टिविटी में यू विल सी सम क्वेश्चंस एंड यू विल आंसर दोस क्वेश्चंस। ओके, फ्रॉम द पोजीशन पार्ट से डिफरेंट सेंटेंसेस क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स दे लेंगे। एंड देन आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे मॉडल वर्ब का भी, राइट, मॉडल वर्ब हैज टू, हैव टू। सो यहाँ पे हम उसका भी आज इंट्रोडक्शन लेंगे। सो वी आर गोइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स ऑन 14th डे, राइट। ओके, सो 14th डे पे आज हम ये करने वाले हैं। ओके, सो पहले हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज से। आई विल शो यू दैट एक्सरसाइज एंड यू विल डू दैट बाय योरसेल्फ। ओके, you will understand. If there is some confusion, then definitely you can ask, but that part is very easy exercise, and I'm sure that you will do that exercise very easily, very quickly. And let me show you this exercise. This exercise is related to verb to be past situation, जिसको हम past simple भी बोलते हैं। सो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, देयर आर टू पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड्स। टू ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, आपको सेंटेंस पढ़ के उसका जो भी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो आप चूज करके सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इन दिस पार्ट, इस एक्सरसाइज में ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हैं, आपको क्या यूज करना है, आपको वॉज, वर, वॉजंट और वरंट यूज करना है। सो जहाँ पे भी जैसे भी सेंटेंस का सेंस निकल रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, वो आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल ले लें हम। अब यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ए और बी, ये मतलब यहाँ पे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो नाम की जगह हमने ए और बी बोल दिया कि ए इज अ पर्सन हु इज आस्किंग समथिंग, बी इज अ पर्सन हु इज आंसरिंग। सो ए ने कोई क्वेश्चन पूछा, बी उसको आंसर कर रहा है। सो ए जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें आपके पास ऑप्शन है वॉज एंड वर, वो आप चूज करके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेयर वर यू यस्टरडे आफ्टरनून। When you complete the question, also understand the sense of this question. What is the meaning of this question? Where were you yesterday afternoon? And then you will give the answer. When you give the answer, again, you will choose the correct one. Oh, I was at the library. Okay, so you will not say I were at the library because then it will be incorrect. ओके, सो इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, इजी है। पूरा कॉन्वर्सेशन है छोटा सा, यहाँ पे देयर आर टू पीपल, ए एंड बी, दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, देयर आर सम ऑप्शंस, यू विल चूज द करेक्ट ऑप्शन।
And here there are simple sentences related to there. यहाँ से there के use करके हम sentences बना रहे हैं. But in all the sentences, the situation is related to past. So you can use any situation. You can use present situation. You can use future situation. So present use करके future use करके भी sentences देख सकते हैं कि अगर हम present use करेंगे, future use करेंगे तो क्या sense निकलेगा, कैसे sentence complete होगा, right? So you will do that, and then you will do these two exercises. करने के बाद ये two exercises try करेंगे आप, right? यहाँ पे write affirmative and negative sentences आपको use करना है. So for example, affirmative, we also call them positive sentences. एक example दिया हुआ है आपको, इस example की help से सारे sentences complete कर लेंगे. So for example, the students not teachers. So दोनों sentence आपको बनाना है, पॉजिटिव भी बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है. सो यू विल मेक टू सेंटेंसेस. ओके, सो फॉर एग्जांपल, दे वर स्टूडेंट्स, दे वर नॉट टीचर्स, दे वरंट टीचर्स. सो इसी तरह से ये जो 4 एग्जांपल्स हैं, इनको भी आप कंप्लीट कर लेंगे. ट्राई करके देख लेंगे जल्दी से. इट विल ओनली टेक 5 to 7 minutes. एंड इन दिस पार्ट, यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट क्वेश्चंस दिए हुए हैं. आपको सिंपली क्वेश्चंस कंप्लीट करना है यूजिंग was और were. Was और were करके questions complete कर लेंगे. You will use was and were where you think that suits the subject. Okay, so if subject is singular, you will use was. If subject is plural, you will use were. Okay, and these are questions. Okay, so questions हैं. Okay, कुछ WH word के questions हैं, कुछ normal questions हैं, yes no questions हैं. So जब आप question complete कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी try कर लेंगे कि उस question का answer भी try कर लेंगे. ओके, उस क्वेश्चन का आंसर भी अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, जो भी आप आंसर देना चाहते हैं वो ट्राई कर लेंगे. ओके, सो दैट वे यू विल कंप्लीट द क्वेश्चन एंड यू विल गिव आंसर. इफ इट इज अ यस नो क्वेश्चन, you will give both answers, yes answer, no answer. If it is a WH word question, then you will give a normal answer without using yes and. ओके, सो ये एक्सरसाइज कर लेंगे. एंड इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, इजी है. आपको इजीली समझ में भी आ रहा होगा कैसे करनी है. ठीक है. ऑल राइट, सो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ हिंट नहीं दे रहा हूँ. आई एम नॉट गिविंग यू आंसर्स ऑल्सो. अभी आंसर्स देंगे भी नहीं यहाँ पे इस एक्सरसाइज में, आप उससे ट्राई करेंगे. ओके, एंड ट्राई करने के बाद इजी है, हो जाएगा. इफ़ यू फाइंड एनी confusing, if you find any problem, if there is something that you find difficult, वैसे difficult नहीं है, I'm sure कि आप लोग easily कर लेंगे. Okay, so you have comment section, you can ask question there, or if you want to write answers of these exercises, you can write answers there also. Okay, चलिए. So ये हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज हो गई. अब एक और एक्सरसाइज करेंगे हम. ओके, इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, I tell you. Let me open the page first. पहले हम पेज ओपन करते हैं, then I tell you what you have to do in this exercise. Okay, this is actually a kind of fun activity where you will see some questions, random questions देखेंगे आप. Okay, and according to the question, you will try to answer the question. If you see a yes no question, then you know you will give both the answers. Yes answer also, no answer also. If you see WH word question, then you know you will give answer according to the question. And I will just show you some random questions, and you will try to quickly answer those questions. Okay, it is on your screen. It is a wheel, sort of wheel, and in this wheel there are different questions. Okay, there are different questions. So I will spin this wheel from time to time, and you will see a different highlighted question. And when you see that different highlighted question, जब आपको वो question दिखे screen पे highlighted होता हुआ, so आपको quickly उसका answer देना है. Okay, you will try to quickly answer that question. Okay, सोचना नहीं है, जल्दी से try करना है, and then you don't have to translate भी नहीं करना है. कोशिश करनी है कि without translation you will answer this question. For example,
So this is your highlighted question, right? So you will read this question louder, okay, loudly. Does he have courage, like this? And you will quickly answer this question. Answer could be yes, answer could be no, because it is a yes no question. So सब चीजें आपको समझनी है. Okay, you also have to understand that it is a present related situation. You also have to understand that it is a question from position. Does he have courage? For example, ये मैं आप लोग को example दे रहा हूँ. Yes, he has courage. No, he doesn't have courage. यहाँ पे आप अपनी तरफ से कोई sentence भी add कर सकते हैं. For example, no, he doesn't have courage, but yes, his brother has courage. Yeah, but his sister has courage. Right? No, he doesn't have courage. Okay, like this. So you can add some different sentences from your side also. All right, got it? चलिए कुछ और random questions जल्दी से try करते हैं, and you will quickly answer these questions. Answer it. Give both the answers. Done. Okay. I'm trying to spin the wheel quickly, as much as possible, so that you can see different questions. Okay, answer this one. Done. Okay. अच्छा, यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है आपको क्वेश्चन समझने में, आंसर देने में, तो थोड़ा सा पॉज कर लेंगे. ओके, पॉज करके ट्राई करेंगे, बट ट्रांसलेशन से बचेंगे. ओके, एंड ज्यादा देर भी नहीं लगाएंगे, राइट, कि हम सोच रहे हैं देर तक. जल्दी से क्विकली ट्राई करना है, एंड देन यू हैव टू पे अटेंशन टू योर आंसर. Okay, now understand the situation. Okay, understand the question, meaning, and then quickly give the answer. Yes, no. Yes, no. You can add different sentences from your side. Okay, so it doesn't mean that if you are seeing this question, so you only have to answer this question. You can add some different sentences from your side. Okay, for example, no, I don't have a red pen, or yes, I have a red pen. No, I don't have a red pen, but yes, I have a black pen. I have a blue pen. My sister has a red pen. Okay, my sister has a red pen. My brother doesn't have a red pen. He has a black pen. So just use some different sentences. Try to make sentences as much as possible, so that you are thinking quickly and you are making similar sorts of statements. Okay? Okay. सो इस एक्सरसाइज में आप ये टेस्ट कर रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहे हैं, कि आपको स्ट्रक्चर्स कितनी क्विकली स्ट्राइक कर रहे हैं. व्हेन यू आर सीइंग डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू पोजीशन, आपको कितनी जल्दी स्ट्रक्चर्स स्ट्राइक कर रहे हैं. यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, यू आर गिविंग द आंसर अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, and you are trying to understand different situations. What are those different situations? Situations related to present, past, and future. Okay, understand the question, answer the question.
quickly as much as possible. This is interesting question, and I'm sure everyone will say yes, right? Because it's a wheel, so we cannot control it. So you will see any question, right? And there could be a repetition of questions also, but you have to keep on trying, okay? Keep on giving answers. All right. Okay. So did you try these different questions, right? यहाँ पे आपने questions के answers try करे. So you are trying to think as quickly as possible in terms of understanding the meaning also, in terms of understanding the situation also, and also giving the correct answer to the question. चलिए, ठीक है. Now I am just closing this page. Okay, and give me one moment. Give me one moment. And I'm just trying to use the different activity for the same questions, okay? And अब एक बार आप लोग जल्दी से ये सारे questions के answers देंगे. Okay. So you will quickly try to answer these questions as quickly as possible. So there are different questions on your screen. You will try to answer all these questions. सब जल्दी से ये इन questions को पढ़ के, okay? जल्दी जोर से पढ़ के, right? You will read the question loudly and you will answer the question loudly. Okay, you will give both answers. If it is a yes no question, you will give yes answer also, you will give no answer also. Okay, if it is a WH word question, then you will choose your answer, what you want to say. Okay, जल्दी से इसको करके देखेंगे, जल्दी से क्विकली. ओके, आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस के आंसर ट्राई करके देखेंगे. एंड दैट वे you are practicing your sentences, your questions, your answers from position structure. Okay, so यहाँ पे pause करेंगे and you will answer all these questions. And again remember, you will not do the translation. ट्रांसलेशन नहीं करेंगे जब आप सेंटेंस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिड योर फादर हैव अ बाइक 2 years ago? सो इट इज अ सिचुएशन, इट इज अ पास्ट सिचुएशन. आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आना चाहिए, ओके, सेंस भी समझ में आना चाहिए, मीनिंग भी समझ में आना चाहिए. एंड जब आप उसका आंसर दे रहे हैं तो वो भी जल्दी से क्लिक करना चाहिए कि हाउ विल आई आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ विल आई से यस पार्ट, हाउ विल आई से नो पार्ट. ओके, सो ऐसे सारे सिचुएशंस में आप तो जल्दी से आपको क्लिक होना चाहिए. ओके, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग, एंड हाउ विल आई आंसर दिस क्वेश्चन. पॉज करके सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. एंड कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, डिफिकल्टी है, सो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे. स्ट्रक्चर्स रिव्यू करेंगे, आपको डेफिनेटली हिंट मिल जाएगा अगर कहीं पे कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है. And if there is something that is not clear, then you can ask using comment section. Okay, and you can also write your answers there. So ये exercise कर लेंगे यहाँ पे. Done? Okay. चलिए, तो आप ये एक्टिविटी कर लेंगे, अच्छे से करेंगे, अच्छे से आंसर्स देंगे, इसको प्रैक्टिस में ले आएंगे थोड़े से. सो ये जो एक्टिविटीज हम करते हैं क्लास में, सो दिस इज अ वे टू टेल यू, दिस इज द आइडिया दैट आई वांट टू गिव यू, कि जितना ज़्यादा आप ऐसे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के आंसर्स, क्वेश्चन सोचेंगे, जितना ज़्यादा इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो रहे हैं. कंफर्टेबल इन व्हाट सेंस? कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, in terms of thinking, in terms of
using sentences, in terms of asking questions, in terms of giving answers if there is a question. Okay, so ये क्योंकि because it will happen gradually, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, बट डेफिनेटली इट विल हैपन, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा यू हैव टू कीप ऑन डूइंग सच थिंग्स। ओके, इसलिए हर क्लास में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ताकि आपका वो रिवीजन होता रहे, बिकॉज रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ऐसा नहीं है कि हमने कोई टॉपिक किया एंड देन वी हैव डिफरेंट टॉपिक, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वी हैव डिफरेंट टॉपिक। वो तो ये हो गया कि आपको समझ में आ गया, आपने समझ लिया, बट आप क्या यूज कर पा रहे हैं उसे, क्या आप यूज कर रहे हैं जो आपने समझा है, वो करने के लिए तो आपको बार बार ट्राई कर, और जितना ज्यादा ट्राई करेंगे उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा दैट या आई अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, आई नो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, आई नो हाउ टू गिव आंसर्स, एंड देन यू कैन यूज दोस स्ट्रक्चर्स कंफर्टेबली। लेकिन उसके लिए अगेन एफर्ट्स। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो नया टॉपिक है। ओके, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टॉपिक? नेम ऑफ दिस टॉपिक इज हैज टू, हैव टू, एंड इट इज वन ऑफ द मॉडल वर्ब्स। काफी सारे मॉडल वर्ब्स हैं जो हम राइटिंग में, स्पोकन में यूज करते हैं इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल कैन, कुड, विल, वुड, शुड, ought to, used to, may, might. Okay, so there are many modal verbs. Of course, modal verbs हम वो करेंगे, जो डिफरेंट मॉडल वर्ब्स हैं वो भी करेंगे। यहाँ पे ये जो मॉडल वर्ब है जिसको हम हैज टू, हैव टू बोलते हैं, ये नॉर्मल सिचुएशंस में भी यूज होता है, ये नॉर्मल सेंटेंसेस में भी यूज होता है। सो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको आइडिया लेके इसको थोड़ा सा यूज करके देखेंगे दैट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस we make, we use in terms of speaking, in terms of making, saying something, asking something. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझें कि मॉडल वर्ब जो हैज टू, हैव टू है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, वो इन what situation we use it. So for example, when you want to say that something is important, something is necessary, और जहाँ पे आप थोड़ा सा ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ नेसेसरी है, एंड देन यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू डू दैट थिंग, और आपको वो करना है, राइट। सो देयर यू मेक सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल वर्ब हैज टू, हैव। ये जो सेंटेंसेस हैं, थोड़ा सा इस पार्ट को भी समझ लीजिए, एग्जाम्पल से आपको वैसे समझ में आ जाएगा, लेकिन इवन देन आई एम टेलिंग यू राइट नाउ दैट वी मेक सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस फॉर टू सिचुएशंस। दो तरह की सिचुएशंस में आप ये सेंटेंसेस यूज करते हैं। वन इज अ नॉर्मल सिचुएशन व्हेन यू वांट टू से दैट समथिंग इज इम्पोर्टेंट, समथिंग इज नेसेसरी, आई वांट टू डू दैट। ओके, एक तो ये सिचुएशन हो गई कि मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं पे जाना है। सो इस तरह के सेंटेंसेस में हम हैज टू, हैव टू यूज कर रहे हैं। ओके, एंड देन एक और सिचुएशन होती है, देयर वी टॉक अबाउट ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी की बात होती है, राइट, कि आपको ऐसा करना है। सो देन यू मेक सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कि ये तो मेरी ड्यूटी है, मुझे ऐसे करना पड़ता है। सो व्हेन यू मेक सेंटेंसेस लाइक दीज, के वेयर यू गिव द सेंस ऑफ ड्यूटी, वेयर यू गिव द सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, इन हिंदी आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी, कि करना पड़ता है। Okay? So I'm giving you the idea in Hindi so that you can easily understand that okay, in those situations हम इस तरह के sentences use करते हैं। okay? जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो ही जाना है कि हम किस तरह से sentences को क्या सेंस निकाल रहे हैं। लेकिन इसके लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग ले लें, किस तरह से हमको सेंटेंस को यूज करना है, what kind of structure is there in order to make sentences related to modal verb has to have. Okay, so पहला पॉइंट जो सिंपल सा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, what is the meaning coming out, that is related to something that is important, something is necessary. Second meaning, something that is related to duty, related to obligation. Okay, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके स्ट्रक्चर्स। सो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे जब आप यूज करेंगे तो अगेन यहाँ पे किसकी बात होगी, यहाँ पे होगी सब्जेक्ट की बात। कौन से सब्जेक्ट? सिंगुलर, प्लूरल। हमें पता है सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, हमें पता है प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। सो बस एक छोटा सा चेंज जो है वो आपको ध्यान रखना है, दैट व्हेन यू मेक सेंटेंसेस विद सिंगुलर सब्जेक्ट यू विल यूज हैज टू, एंड आफ्टर हैज टू यू विल यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म।
वर्ब्स तो समझते हैं, एक्शन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल वॉक चलना, लाफ हंसना, प्ले खेलना, गो जाना, कम आना। सो ऑल दी एक्शन वर्ड्स, ओके, जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो हमारे वर्ब्स हैं, राइट। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा पार्ट इजी है कि अभी हमको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे आपको पता होगा कि हर वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। सो अभी इस सिचुएशन में अभी हमको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट है। सो आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ब्स हैं। वो वर्ड्स वर्ब्स हैं जो हमें एक्शन की आइडिया देते हैं, राइट, एक्शन की इंफॉर्मेशन देते हैं कि कुछ एक्शन होना है, राइट। सो उन वर्ड्स को हम वर्ब्स बोलते हैं। एंड थोड़ा सा समझने के लिए, वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे वॉक चलना, गो जाना, कम आना, राइट। सो दीज आर वर्ब्स, ओके, एंड देयर आर सो मेनी वर्ब्स, बहुत सारे वर्ब्स हैं। बट आपको उन वर्ब्स की तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आइडियाज होना चाहिए जो हम कॉमनली यूज करते हैं। वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पे कि आपको क्या यूज करना है, सेंटेंस क्या बोलना है, उसके अकॉर्डिंग यू विल यूज वर्ब इन योर सेंटेंस, ओके। So, when you make positive sentences, you will follow this structure. For positive sentences, when subject is singular, now subject could be any, could be he, could be she, could be name of a person, could be it. There you will use has to, and with that verb first form. When your subject is plural, for example, you, we, I, they, children, or lot of people. For example, children, they are lot of, for example, they are many in numbers. So there आप has to की जगह क्या use कर लेंगे? Have. Okay, and then verb first form. So एक small सा change क्या ध्यान में रखना है आपको? Has to and have to. Okay, and what kind of sense is coming out when you are making sentences with this structure? Something that is important, something that is necessary, and you want to do it. Okay, so that is the sense coming from this structure. Okay. ऑलराइट, एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग ही हैज टू गो। नाउ व्हाट इज द सेंस कमिंग आउट फ्रॉम दिस सेंटेंस, ही हैज टू गो? Now, because the subject is singular, that's why you are saying has to. Okay, remember this point, and then this is your verb first form. Simple. Okay, he has to go. What is the sense coming out? That it is important for him, it is necessary for him, and the sense is coming, उसे जाना है. He has to go. Okay, he has to go. She, singular, has to verb first form by, and this is your object part. She has to buy a phone. We, it is plural, and because plural, we are using in place of has to, have to, and this is your verb first form. Okay, and this is rest of the part that we call object. Okay, we have to do the homework. So this is important for us. We have to do the homework. हमें homework complete करना है, हमें homework करना है. So this is the sense, this is the meaning coming out from these sentences. Okay, you have to do this work. So you are telling someone that this is necessary for you, this is important for you, you have to do this work, आपको ये काम करना है. Okay, so this is the sense. So simple sense is coming. इसलिए यहाँ पे सारे मॉडल वर्ब्स में से हमने ये मॉडल वर्ब एक चूज किया है, because we use it in normal sentences. We use such kind of sentences a lot. कि मुझे वहां जाना है, I have to go there. Okay, I have to do this, I have to talk to her, I have to talk to father, I have to watch TV, I have to read newspaper. So we make normal sentences. Okay, and in place of these sentences, of course, you can also use I want. Okay, so for example, I want to watch TV, I want to read newspaper, right? But जब आप has or have to model verb use करते हैं, so you want to give the idea that something is important, something is necessary. Okay, that's why you are making sentences with the help of has to and have to. And because here हम यहाँ पे present situation की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इन चेंजेस का ख्याल रखना. क्या चेंजेस हैं? सिंपल से चेंजेस हैं, हैव टू एंड हैज टू, एंड दैट will depend on subject, singular, plural subject. Okay, you have to do this work. I have to play cricket. I have to play cricket. Okay, so someone is saying that I want to play cricket, I have to play cricket. Okay,
यूज करके देखेंगे। एंड नॉर्मली हम इस तरह के सेंटेंसेस काफी यूज करते हैं, राइट? सो दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंसेस एंड वी विल मेक these sentences with the help of these structures. So all the positive sentences with singular subject and with plural subject, and there is a small change that you will use has to and have to. Okay, that जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट समझ लीजिए जल्दी से। व्हेन यू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, सो देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ नेगेटिव पार्ट। जो नेगेटिव पार्ट आप यूज करेंगे, जो नहीं यूज कर रहे हैं सेंटेंसेस में, उस नहीं के लिए हमको यूज करना है व्हेन योर सब्जेक्ट सिंगुलर देन यू विल यूज डजंट। ओके, एंड डजंट के बाद आप यूज करेंगे हैव टू एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सो व्हेन यू आर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस, आपको क्या ख्याल रखना है? इफ माय सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इफ आई एम using singular subject, so for the negative part I will use doesn't, and after doesn't I will use have to. Okay, and then verb first form and then object. Next point, when my subject is plural, so in place of doesn't, I will use do not for the negative term. नेगेटिव टर्म के लिए मैं डू नॉट यूज करना है मुझको। ओके, सो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या एक स्मॉल सा चेंज का आपको ध्यान रखना है, दैट इज डजंट एंड डोंट। एंड दोनों ही सिचुएशंस में आपको हैव टू यूज करना है। तो अब यहाँ से आप एक और पॉइंट ये समझिए कि हैज टू का यूज खत्म हो गया। सो हैज टू का यूज सिर्फ आप कहाँ पे कर रहे हैं? when you are making positive sentences and when you are talking about singular subject। जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, वहीं पे सिर्फ आपको हैज टू यूज करना है। एंड अदरवाइज वी विल नॉट यूज टू हैज टू, विल नॉट यूज हैज टू एनीवेयर एल्स। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, हैव टू ही यूज करना है। बट एक छोटा सा चेंज क्या है, दैट यू विल यूज डजंट और डोंट। So if subject is singular, doesn't. If subject is plural, don't. And again, यहाँ पे doesn't and don't का sense है that you are using negative term. Okay, negative term के लिए हम does not, जो हम short form में उसको doesn't भी बोलेंगे। Okay, and do not, in short, we can also say don't. Okay, so in spoken, we mostly use uh, that short forms, right? So that's how you will use does not, doesn't, and do not, don't. Okay. So आप contracted forms भी use कर सकते हैं। Okay. And जल्दी से इनके examples देखिए। Okay. What is the example coming? She doesn't have to buy the phone. Okay. So subject is singular. You are using doesn't, have to. Simple sentences, right? बस छोटा सा point समझना है। Once you understand that point, and then next point is what is the sense coming out? She doesn't have to buy the phone, right? उसे phone नहीं खरीदना है। Okay. So for understanding, she doesn't have to buy the phone. This is the meaning coming out from the sentence. So when you are thinking that something is not important, because here we are talking about negative sentences. So negative है तो negative सोचना है, okay, that something is not important, not necessary for a person or for me, then you are making negative sentences. Okay. अब ये जो आप सुन रहे हैं ना कि समथिंग इज इम्पोर्टेंट, समथिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये सिचुएशन समझने के लिए हमारे पास आइडिया कि किस सिचुएशन में हमको ये यूज करना है। ओके, बिकॉज अगेन हम ट्राई तो ये करेंगे कि हम ज्यादा हिंदी के सेंटेंसेस ज्यादा ट्रांसलेशन नहीं करें, लेकिन मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स इसलिए दिए हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ओके, these kind of sentences are there if we are thinking in Hindi. Okay, so this sense will come out from these sentences. Okay, lekin you have to understand this way also, that when you are talking about something is important, something is necessary, or in negative situation, something that is not important, not necessary. So that way you will take care of these sentences. So negative sentences में आप subject के according सिर्फ क्या use कर रहे हैं? Don't and doesn't. And सारे examples में हम क्या use कर रहे हैं? Have to. So that way you have to use.
Okay, and understand the sense also. I don't have to ask a question. He doesn't have to watch TV. They don't have to attend the party. Okay, so only the change is related to the negative part according to the subject. Doesn't and don't. Doesn't and don't. Okay. If there is any question, if there is any confusion, then you can write that in comment section. You can ask there. Okay. Now, next part is that you have to think some of the sentences related to such examples. Think of such examples where you use such kind of structures, where you make such kind of sentences. When you say to your mother, I have to complete my homework. Okay, that is important. Okay, when you say, I don't have to go to school tomorrow. Okay, because it's a holiday, right? It's Sunday tomorrow. I don't have to go to school tomorrow. Okay. I don't have to talk to her. I don't have to talk to him. Right. So you can think of any sentence, okay, related to this situation, related to this structure, where the sense is coming out like this, जहाँ पे इस तरह का sense निकल रहा है, okay. So for such kind of sentences, we will use a modal verb for two situations, positive sentences and negative sentences, okay. And जैसा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो मॉडल वर्ब है, हैज टू, हैव टू, ये दो सिचुएशंस में यूज हो रहा है, जहाँ पे हम बोल रहे हैं समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, समथिंग दैट इज नेसेसरी. सो ये जितने भी एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, ये उन्हीं उसी सिचुएशन से रिलेटेड हैं, वेयर यू वांट टू से समथिंग इज इम्पोर्टेंट, समथिंग इज नेसेसरी. Okay, and there is one more situation where you talk about your duty, where you say that it is somebody's duty to do something like that, or it is important for that person to do that. ओके, सो उस सिचुएशन में भी हम यूज करते हैं, एंड थोड़ा सा हिंदी में सेंस चेंज हो जाता है, राइट. सो इट इज आर हिंदी दैट वी मेक टू डिफरेंट सेंटेंसेस यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में पहले तो हम ये पॉजिटिव प्रेजेंट सिचुएशन के स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे. अभी हमने टू पार्ट्स देखे हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस देखे हैं आपने. इसमें दो चेंजेस हैं. प्रेजेंट सिचुएशन में जब आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, सो यू आर यूजिंग हैज टू और हैव टू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. व्हेन यू आर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस, यू आर यूजिंग doesn't have to or don't have to, that also अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ओके, एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, वो किस तरह का सेंस निकल रहा है जब हम ये सेंटेंसेस यूज कर. सो थोड़ा सा इन सेंटेंसेस को समझ के इनके एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आर देयर दैट यू कैन यूज, यू कैन टॉक, एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, यहाँ से. एंड जो हमने आज एक्सरसाइजेस करी हैं, ओके, वो आप जितनी बार ट्राई हो सकता है वो करके देखिए. एक तो हमने एक्सरसाइज करी है वर्ब टू बी से रिलेटेड, पास्ट सिचुएशन से रिलेटेड, तो उसको तो आप जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे. एंड उसके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं उसमें, उसमें दोनों आंसर्स देख के देखेंगे, यस नो, राइट. सो वहाँ पे वो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड जो हमने आज स्पिन व्हील वाले क्वेश्चंस देखे हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम थ्री पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसको भी प्रैक्टिस करके देख लेंगे. ओके, जल्दी से क्वेश्चंस देखे देखेंगे तो सो देयर वुड बी अ सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस रिलेटेड टू पोजीशन सेंटेंसेस, पोजीशन क्वेश्चंस. ओके, एंड ये जो हमने मॉडल वर्ब आज देखा है, इसका इंट्रोडक्शन कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, क्या सेंस निकल रहा है, ये भी ट्राई करके देखेंगे. ओके, सो यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो आज हमने 14th डे पे ये नया टॉपिक स्टार्ट कर लिया है मॉडल वर्ब का. And in coming classes we will complete this topic, and we'll try to bring in practice, because practice में लाना सबसे important point है. So वो आपको करते रहना है. ओके, एंड ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना ज़्यादा इसको कर रहे हैं. जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कम टाइम में हमको मिलेगा, राइट. सो डेफिनेटली करते रहेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो रिजल्ट तो मिलेगा, पर धीरे भी मिलेगा. ओके,
एंड रिमेंबर यहाँ पे हमारे फर्स्ट लेवल भी चल रहा है, उसकी क्लासेस भी अटेंड करिए, लेवल 1 भी करिए, एंड देन देयर आर अदर क्लासेस आर आल्सो गोइंग ऑन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो. So if someone is interested in these classes, tell them, tell your friends if they are in 10th, 11th, 12th, right? If they are in 9th class, so उनको बताइए, उनको थोड़ा सा advantage मिलेगा इन classes से. They will also learn and understand. Okay, so spread the message among your friends, right, about these classes. Okay, and if there is any confusion, then you can write that in comment section. All right, everyone. So we are going to continue in the next class. And till then, take care. Bye bye. We will meet in the next class. And most importantly, keep